the Kildanese or Al-Iraq today and came to Palestine, and anyone want to check this history, it's so easy just to go to check the Old Testament, the Jewish Bible, Genesis, first ever chapter, Genesis, verses 21/34, which says, "We sojourned Abraham in the Palestinian land many days." So we are there as a Palestinian, as Canaanite, land of Palestine, land of Canaan, long time before the prophet Abraham lifted again his birthplace or the Kildanese and came to Palestine. If there is a real title deed, official document that prove we, the Palestinian, is the indigenous people, it is only and only the Old Testament, the Jewish Bible, Torah, it started. So if there is anyone, likewise, the American ambassador in Israel denying our existence and say, who said, of course, that there is no such thing called the Palestinian people, just we, the Palestinian, will continue to remind him back to read what is written in Genesis, what is written in the Holy Book, what is written in the Old Testament. This is the very old history. Our name, our explicit name, Palestini, not only Palestine or Palestinian, Palestini, Palestine, Palestinian land, Canaan, Canaani land is repeated hundreds of times in the Old Testament. So we are there before they came or they reached, and their father Abraham reached our land, Palestine. This is the old history, but the modern history was started in November 2nd, 1917, when your old colonizer, the British, issued the despicable, notorious Balfour Declaration, November 2nd, 1917, and in this declaration, whom have no footprint at our historical land, Palestine, zero footprint, they pledged, they gifted our homeland to the Khazarian Jew. And when we say Khazarian Jew, we mean it. And every one of you have his mobile, he can check what's the meaning of Khazarian Jew, K-H-A, Khazarian Jew. Those are the European Jews whom converted to Judaism 1100 years ago. They are not descendants of Ishaq, Jacob, of Israel, but again, British to those European Khazarian Jews. At that time, at that exact day, the Palestinian modern misery was started. And the one who is witnessing, you are witnessing, and we are enduring is the British United Kingdom. Step forward, mid-1930s, we launched the first revolution. Thanks God, India was there in our very first revolution. And they helped us, you the Indian people, helped the Palestinian at that time. You pledged and you one resolution. India, under the great late Mahatma Gandhi, refused against this resolution. And Mahatma Gandhi said at that time, Palestine belonged to the Palestinians, wise England. Unfortunately,
with the logic of power, with the full support of the British mandate, and at that time, whom Jewish, not Israeli, at that time it was called Jewish terrorist gang. And when we say terrorist, we mean it. This is the exact name that the British mandate gave it to them. But unfortunately, they allowed them to be militarized to the teeth and demilitarize the Palestinians. Totally demilitarize the Palestinian people. The Palestinian people used to be hanged to death for one bullet, one knife. 1940. By the very last day of the mandate, the British mandate, the Jewish military, the Jewish terrorist gang declared the establishment of the State of Israel, which was fully well equipped and militarized. And they succeeded, even before that time, to expel and to ethnically cleanse thousands and thousands of the Palestinian indigenous people from their homeland. After, of course, tens of terrorist massacres that they conducted, and any one of you can check Deir Yassin massacre, King David Hotel massacres, and as a Palestinian people refugees. My late father was born in our original village, Berga, and I personally born in a refugee camp in Gaza. Even my family till today, my entire family, Abu Shawish family, is still living in Gaza. So we became refugee. 60% nearly of the Palestinian population is living in the diaspora. Then Israel was established on 78% of the historical land of Palestine. The remaining 22%, which is West Bank, including East Jerusalem and Gaza, had been occupied by Israel in June 6, 1967. So I born in a refugee camp under the Israeli occupation rule, and still live under the Israeli occupation rule till now. This is the history. So anyone want to tackle the Palestinian issue, he should tackle it. This is exactly what did the United Nations General Secretary General, His Excellency Antonio Guterres, did in his speech. Happen in a vacuum, full of thought of a problem solving, and link 7 October to his root, which so again, history for us, as we just want to remember, but because we look at Israel to remove our history. And we should not teach they did not war about the Israeli occupation, but I was born in a refugee camp. So I raised to ask, and I born to ask, then I discovered, the very first day of my life, I discovered that I'm a refugee. So even if they will succeed to change or to enforce, or if they succeed, I mean, to remove every single textbook
Palestine from every single textbook. Palestine is in our heart. Palestine is yours. Palestine is your history. If they accuse us of being terrorists, I would like just to remind you, the great martyr Bhagat Singh they did not invent the wheel. Before them, each one of the occupiers worldwide used to accuse anyone resisting them of being anarchist. This is something they accused your ancestor, anarchist. And one very despicable accusation was disgraceful. Could you imagine? They accused part of your ancestor of being disgraceful. You did not thank them for occupying your ancestor, so you are disgraceful. Not only terrorist, but disgraceful. This is so. When we defend ourselves, this is your exact history. Don't forget, just 80 years ago, you were there in the shoes of the Palestinian people. Your grandfather was there. And I'm pretty sure he told you something about that. The British. You were there. You're part of the whom led this unfortunate suffering. In 1919, there's a big massacre conducted against your ancestors. We should remember our history, not only as Palestinian, but as Indian, not because we are going to revenge, but because we want to build a future, a very safe future, that it will not happen again. No one will come to occupy us again. No one will come to murder us. 722 days in a row up to this day. It's a televised textbook genocide. This is the first ever time in history that we as international community, as people worldwide, to watch in our smartphones in a daily basis the ongoing genocide against the Palestinians. This genocide cannot be happened without a full complicity of the United States of America. I'm not revealing a secret, and this is not a secret. And I'm not attacking the United States of America. The United States of America is attacking the Palestinians. We are talking about today 150,000 tons of explosive material, 2.3 million innocent human beings living there. We are talking about 75 kilograms of explosive material per capita. Each one of Gaza has shared 75 kilograms of explosive material. This ongoing and televised genocide was not to be happened without the full complicity of the Western country, at least at the very beginning. Now they are woke up, many of them woke up, and they start believing that this war is to serve, and I would like you to remember what did the fugitive from justice. Fugitive from justice is the wanted man. Benjamin Netanyahu said 2 days in the United Nations General Assembly. He said something none of you might realize the exact deep meaning of it, which is finish the job. Finish the job means expelling the entire Palestinian people from the historical land of Palestine. The Israeli believed that in 1948, Ben Gurion had the chance to complete
of the Palestinian people from the historical land of Palestine. But he did not. He conducted a mistake and he did not did so. So they used to say that he did not finish the job and we should finish the job. The fugitive from justice, the wanted criminal Prime Minister Benjamin Netanyahu, loud and clear, repeated 2 days ago in the United Nations General Assembly, which means to expel, ethnically cleanse the remaining 4.2 million of the Palestinians from their historical land, entire historical land, Palestine. This is a very dangerous issue. This is not easy. We should not take it as just wording in the United Nations General Assembly. We should take it in a serious manner. But again, I'm pretty sure that you all have been hijacked since January 1st, 2023, up to October 6th, Friday, October 6th, 2023, more than 400 Palestinians, 80 of them is pure children, has been slaughtered, has been killed. Vast majority of them in West Bank, where is there no Hamas. Just at that year, one of them, his name is Muhammad al-Tamimi. I know his father, I know his family. 2.5 years old. They sniped him. They killed Tar, intentionally killed him. Part of us as a Palestinian used to be killed for fun. And many of us had been killed to tape him and to publish it in their social media. This is how the Palestinian life before that settlement was there, occupation is there, refugee camp is there, tens of massacres even conducted against the Palestinian people after 1948. So life was not, for them, this is the normal life. For us, it's life under occupation, life in a refugee camps, life in a siege, under the siege. Sorry. This is the life of the Palestinian people. But again, when it came to that day, there are, again, just to conclude, there are two schools of thought. The Zionist school of thought, which want us to just know or just believe that there is one day in the history and everything after this day is justified. This at the very beginning, vast majority of Western country, and by the course of the Western media, so that they used to say that Israel have the right to defend itself. But the question is, did the Palestinians have the right to defend themselves? Did the Palestinians have the right to liberate themselves? No one get close to it. Then they used to say that nothing justified October 7th, which means all the Palestinian misery was not justified October 7th. Again, fair enough. But they should also be fair and say, and October 7th did not justify and should not justify 722 days in a row till today of continuous televised, continuous broadcast, continuous massacres, genocide that each one of you already watched part of it.
but no one want to shed light on this issue. Just this, I mean, the Zionist school of thought. But there is an rational school of thought which say that if you want to analyze any event, any historical event, which is that day is already gonna change the human history. Gaza is already changed the human history. So anyone, the rational school of thought, saying that any problem should be tackled from its root symptom analysis. This is the rational school of thought. To talk about the Palestinian question, there is many issues to tackle it. But again, I would like to extend my sincere thanks to the organizer of this event for giving me the opportunity to shed light on part of our history, on part of our misery as a Palestinian people. And I would like to extend many thanks for all of you for coming today, of course. Wish you all the best. And we will continue, of course, together, because we have one shared human future. We will continue together to raise our voice as a human being, as a human believing of one shared future, because again, no one is safe until everyone is safe. I thank you so much. Thank you so much. Thank you. हाँ, नमस्ते साहब। जो भी धार्मिक इतिहास है जिसको लेके काफी चर्चा होती है, उस वहां से शुरू किया। और हमें ये याद रखना होगा कि इजराइल जो लगातार क्लेम करता है कि उनका क्यों हक है पैलेस्टाइन में रहने का और पैलेस्टीनियंस को इतनी बुरी तरह से लगातार मारने का, वो सब जाता है इतिहास को ही वो बार-बार कोट करते हैं। तो लेकिन समझना जरूरी है कि इतिहास क्या है आखिर में। क्या इजराइल जो बता रहा है ज्यूज का इतिहास पैलेस्टाइन को लेके, क्या वो सच है या नहीं, और उसके बाद जो इजराइल ने किया है उसको करने का हक था कि नहीं। तो उन्होंने पूरे धार्मिक इतिहास के बारे में बताया, वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन किस तरह से ज्यूज बोलते हैं कि सबसे पहले वो आए थे, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस वहां पे रह रहे हैं, अगर देखें तो वहां की जो जनता है उनके एंसेस्टर्स उससे पहले से वहां पे रहे हैं हमेशा से। तो वो जो पूरा इतिहास बताया जाता है वो एक बहुत ही सिलेक्टिव हिस्ट्री के तहत बताया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि मॉडर्न टाइम्स में उन्होंने ही क्या किया पैलेस्टाइन के साथ भी, कि 2 नवंबर 1917 वो एक तारीख थी जिस दिन ब्रिटेन ने एक तरह से पूरा अनाउंस किया था कुछ ट्रीटीज के जरिए कि वो पैलेस्टाइन में यूरोप के वो जूस को दिया जाएगा, और उसके बाद उसने एनकरेज किया कि यूरोप में जो जूस थे वो वहां से आके बसना शुरू करें पैलेस्टाइन की टेरिटरीज में। और ये हम सबको पता है कि क्या हालत थी यूरोप में जूस की। तो वो उन्होंने वहां पे जाके जूस का एक्सप्लॉयटेशन खत्म करने की जगह उन्होंने कहा कि आप जाके एक दूसरी टेरिटरी जिस पर वो कभी भी रहे भी नहीं थे वहां को उनको कहा कि आप जाके रहो, और एक्टिवली उस चीज को प्रमोट किया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के पास ये सारा मुद्दा गया, और संयुक्त राष्ट्र ने भी 2 स्टेट बनाने की कोशिश की, पैलेस्टीनियंस के हक अलग रख के। लेकिन इन्हीं सब के चलते चलते 1948 में, जिसको नकबा बोला जाता है, वो हुआ जब किसी ने भी नहीं रोका, जब जूस की एक बहुत ही ज्यादा फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस है जायोनिस्ट, उन लोगों ने
बिल्कुल सेटलर कॉलोनिज्म के अंतर्गत अपने ही प्राइवेट आर्मीज के थ्रू ले लेके सारे वेपन्स वगैरह मारा पैलेस्टीनियंस को, और एक बहुत बड़ा तबका पैलेस्टाइन का वहां से उनको मार के या तो निकाला गया या उनको अपने ही देश में रेफ्यूजी बना दिया गया। आज की तारीख में इन सब चीजों के चलते 60% पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं, और एम्बेसडर साहब खुद ही एक उसी रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुए थे और वहीं पले बड़े। तो उन्होंने कहा यही हमारा इतिहास है, और इतिहास जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वही आने वाला समय कैसा रहेगा इसको भी तय करता है। अब इजराइल चाहता है कि पैलेस्टाइन का इतिहास मिटा दिया जाए, लेकिन जब भी कोई बच्चे पैदा होते हैं रेफ्यूजी कैंप में, तो वो ये सोचते तो है ना कि हम लोग रेफ्यूजी कैंप में क्यों पैदा हुए, तो आप इतिहास इस तरह से मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सही इतिहास बताया जाए उन बच्चों को भी और बाकी दुनिया को भी, और वही उनकी कोशिश है, और वही उन्होंने अपने पूरे इस आज के भाषण में बोलने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मतलब भारतीय लोग समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है पैलेस्टाइन में, थोड़ा अगर कोशिश करें, क्योंकि हमारे साथ भी 1990 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था और जिस तरह से अंग्रेजों ने किया, वही चीज चलती आ रही है साल दर साल, डेकेड से, अब तो मतलब सेंचुरी का लगभग हो गया है जो पैलेस्टाइन के साथ किया जा रहा है। और वहीं से अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, और शुरुआत पैलेस्टाइन की जो मिजरी की सारी शुरुआत है वो भी अंग्रेजों की तरफ से ही हुई है। और इसीलिए लेकिन इतिहास सबको याद रखना होगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पैलेस्टीनियन है इसलिए पैलेस्टीनियन याद रखें, लेकिन इंसान होने के नाते हर इंसान को याद रखना होगा कि पैलेस्टाइन के साथ क्या क्या हुआ है, और कोशिश करें कि अब कम से कम रुक सके। फिर आगे वो बोले कि दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार कि एक नरसंहार हो रहा है जो हम सबके सामने हो रहा है, हम लोगों की स्क्रीन पे चल रहा है, हमारे टीवी पे, हमारे मोबाइल स्क्रीन पे, जो भी स्क्रीन है उन पे वो नरसंहार चल रहा है, और ये 2 साल से हर दिन लगातार चले जा रहा है और फिर भी नहीं रुक रहा है। तो इसका अगर पश्चिमी देशों की इसमें भूमिका नहीं होती इस नरसंहार को सपोर्ट करने में, तो ये नहीं हो सकता था। तो जब वो मुमकिन नहीं था, तो ये हम समझ ही सकते हैं कि पश्चिमी देशों का कितना बड़ा हाथ है इस पूरे नरसंहार में। अब उनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो जाग गए हैं और वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब रुके, और अभी हमने देखा है कि कुछ देशों ने रिकॉग्नाइज भी किया पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट, जो अभी तक नहीं किया था, ब्रिटेन भी शामिल है उसमें। लेकिन इजराइल इन सब चीजों के बावजूद मान नहीं रहा है। इजराइल का एक बहुत ही पुराना ज़ायनिस्ट लीडर था बेन गुरियन, उसने कहा था कि उसने शपथ ली थी कि वो पैलेस्टाइन को खत्म करेगा और वहां पे ज्यूज का साम्राज्य बसाएगा। नेतन्याहू चाह रहा है कि वो जो पूरा नहीं कर पाया बेन गुरियन, उस के काम को आज पूरी तरह से खत्म करे, मतलब उसको अंजाम दे, और वही इजराइल करने की अभी कोशिश कर रहा है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर आप पैलेस्टाइन में हैं तो आपको देखने को मिलता है कि अपने मजे के लिए इजरायली सोल्जर्स और बाकी लोग आके पैलेस्टीनियंस को मारते हैं, सोशल मीडिया पे डालने के लिए वीडियो बनाते हुए पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं। तो ये है पैलेस्टीनियंस की सच्चाई, और जो इजरायलियों के लिए अब दूसरी तरह से एक नॉर्मल लाइफ हो गई है, वो पैलेस्टीनियंस के लिए कितनी दर्दनाक और दर्द भरी जिंदगी है। तो ये सबका हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए इन सब चीजों के खिलाफ। और उन्होंने बस यही एंड में बोला कि गाजा ने इंसानी इतिहास बदल दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके साथ जो जो हो रहा है वो हम सबको दिख रहा है, पर जिस तरह से वो खड़े हैं अपने हकों के लिए और अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, तो उसने भी इंसानों को एक अलग तरह से अपने इतिहास को देखने की हिम्मत दी है। I was just translating in Hindi. Couldn't do a very good job, but tried. Yes. Whether you have Alzheimer's or not is a different issue. But the thing is, history, forgetting history, you're compelled to forget history. ये केवल पैलेस्टाइन को लेकर ही नहीं, हमारे देश में भी चल रहा है। इतिहास को दोहरा मिटाने की कोशिश की जा रही है, नए इतिहास साबित करने की कोशिश की जा रही है। खैर बहरहाल वापिस हम पैलेस्टाइन भी आते हैं। पैलेस्टाइन में हमारे साथ अभी जुड़ेंगे हकीम अल सक्कर। He is a community activist focused on disability issues. A disabled person went to being a dwarf. He's a dwarf person, short stature actually.
He's currently working with an international organization on nutrition programs in Palestine, and also various other issues also he's taking up. I think, as I said earlier, मैं शुरुआत में जैसे कहा था, कोशिश करेंगे इस नौबत के दरमियान कि पैलेस्टीन की हालत वहां की लोगों के मुंह से सुने, ताकि हम ना बोले वहां के लोगों से सुने. I think if you join us, please try to speak on what is the situation currently in Palestine as far as disabled people are concerned. What are after once a genocide? Even I know even before disabled person had a very bad situation there. Various issues were there. The continuous attacks that were taking place by Israel over the number of years actually had created a lot of disabled persons also. In this situation, in the situation of genocide, what is the situation? What is the problems that disabled people are facing? Could you please tell us? We have you 10 minutes, please. Jyotsna. We can't hear you. Hello. Can you hear me now? Yes, yes. इसको म्यूट करना नोटी है. जिस पे म्यूट आप बोलेंगे. Hello. Yes, yes. Require us. ये म्यूट कर दिया. Thanks for अब ठीक है. अब बोलिए. in Palestine. My name is Haitham Safar, and I am a from the staff with an international finalizing its initiatives aimed at enhancing accessibility and the protection for persons with disability in society. The first initiative advocated for use of sign language in emergency department of hospital and in the government media center to use sign language. The second initiative to promote the inclusion of Paralympic sport in local clubs. And the third is aimed to introduce pride in public market to make information accessible for people with visual disability. However, just 2 days later, 7 of October 2023, everything changed. Our focus on empowerment and inclusion suddenly shifted to survival. The genocide to transform our work from strength community participation to simply ensuring that persons with disability could stay alive and access their most basic needs. Persons with disability have been among most directly impacted. We have been targeted and killed alongside the destruction of the infrastructure that the institution that served us. We have been cut off from essential services as the destruction of infrastructure has made movement nearly impossible. Many of us have been forced into displacement sites that are completely not accessible and lack basic conditions for survival, stripping us of independence we once had as leaders in our community. Families have faced impossible choices in the sudden evacuation, increased heavy bombing and attacks. Some families had no option but to leave behind relatives with severe physical or intellectual disability because they could not move them or find
accessible shelters. For families who did manage to flee with their relative, the situation offered no relief. They arrived at displacement site only to find no ramps, no bathrooms, no private space, no adequate medical care, and no support services. Conditions that turned supposed places of protection into new source of exclusion and danger. Individuals with hearing disability were often at even greater risk due to lack of warning or alert providing in sign language. People with physical, visual, intellectual impairments have been left isolated in overcrowded, unsafe shelters. Accessing food and water distribution has been nearly impossible due to the lack of accessible arrangement and overwhelming crowding. The scale of disability has also increased dramatically. Nearly 30,000 people now require physiotherapy and rehabilitation services, which are almost entirely unavailable due to the destruction of rehabilitation centers, the loss of which included major provider, which is Senior Medical Relief and the Wafa Hospital, both which were fully destroyed now. More than 30 Give me a voice of thunder. people Rebel, from whose gruesome hunger scares neither woman nor malnutrition. Over 35,000 people have developed partial or full hearing loss due to the continent's heavy bombing and deafening explosion. We must also recognize the urgent and growing crisis of psychosocial and psychological disability. People with the pre-existing mental health condition have been stripped of medication, care, and safe spaces. Many have deteriorated rapidly without support, and at the same time, the continuous trauma, loss, and fear have produced now. Widespread mental health condition. Thousands now will live with severe depression and other psychosocial disorders. Children, caregiver, and individual across all disability groups are affected. Mental health and psychosocial support services have been determined or not accessible, living and often invisible population and acute need. This genocide has not only resulted in the death of persons with disability through direct attack, but also systematically errs every safeguard of international law meant to protect our right to live independency and with dignity. It has pushed back by centuries, reduced us to dependency and exclusion, silence our voices, and erase our roles in society. This is only part of the story. For those we see, individuals with intellectual disability face an even harsher reality. Many do not fully comprehend what is happening around them, leaving families overwhelmed. In a moment of forced evacuation, some parents have described the unbearable challenge of being forced by imminent danger to make a choice, the impossible choice to leave their children behind because they could not move them or find accessible shelter. It's perhaps the most painful testament to how genocide robs us not only of life but also our shared humanity. Today in Gaza, we can no longer speak of the right of persons with disability. Rights mean nothing when
survival is denied. As the saying goes, you cannot give what you don't have. And how we can discuss human rights in a place where humanity itself is being crushed every day. I want to close with the reflection. The global motto for disability inclusion has leave no one behind. But in Gaza, since 7th of October, for persons with disability, the reality is the opposite. We have already been left behind. Finally, I want to ask you to take an action in your life. Join the global BDS movement for real cuts, device or sanction to end this genocide, or at least do what you can to support sponsorship, scholarship, and partnership. Any routes possible to help Gazians with disability survive this genocide. Thank you. हेलो हैकम साहब सीधे इधर हेलो आपका गाना से हाँ सीधे गाजा से ज्वाइन किया है ऑनलाइन और उन्होंने बेसिकली हम सबको आवाज आ रही है ना उन्होंने बताया कि किस तरह से जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके राइट्स का उनके हकों का पूरी तरह से हनन हो रहा है और जो पहले भी इजराइल करता था लेकिन अभी जिस तरह की जो जेनोसाइड चल रही है उसमें वो किस लेवल पे कितना बढ़ गया है और उन्होंने वहीं से शुरुआत की कि पैलेस्टाइन की जो सरकार है वो कुछ समय से कोशिश कर रही थी कि जो लोग डिसेबिलिटीज के साथ रहते हैं उनके हकों पे काम किया जाए चाहे फिर वो पैरालंपिक्स में के लिए टीम को तैयार करने की बात हो या स्पोर्ट्स भी है या बाकी किस तरह से भी जो एक्सेसिबिलिटी जिस तरह से बढ़ाई जानी चाहिए उस पे कुछ काम चल रहा था लेकिन जब से अक्टूबर 2023 में सारा नरसंहार शुरू हुआ उसके बाद से वो सब चीजें पूरी तरह से रुक गई क्योंकि वहाँ पे सरकार को अपनी तरह से काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है आज की तारीख में 30,000 लोग हैं गाजा में 30,000 जिनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है जो किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं और उनको फिजियोथेरेपी चाहिए लेकिन क्योंकि इजराइल ने सारे अस्पताल ही उड़ा दिए हैं और उन पे बम गिरा दिए हैं तो लोगों को अपनी फिजियोथेरेपी भी नहीं मिल रही है ये सबसे बेसिक चीज थी उसके अलावा जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो तो मिल ही नहीं रहा है साइको सोशल सपोर्ट की जरूरत है अभी जिस तरह का नरसंहार चल रहा है उसमें जो मेंटल हेल्थ लोगों की खराब हो रही है उसके लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए वो सब सुविधाएं बिल्कुल भी मुहैया नहीं हो पा रही है वहाँ पे और इस सब का जिम्मेदार है इजराइल और उसने जो पूरी तरह से जेनोसाइड शुरू कर रखी है वो और उन्होंने फिर आखिर में यही बोला कि जो भी एक राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होता है सम्मान से जीने का हक वो अभी फिलिस्तीनियों का पूरी तरह से छीन लिया गया है अपनी अगर आपकी को किसी भी तरह की फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है और आप उसका इलाज चाह रहे हैं वो तो अभी कोई सोच ही नहीं रहा है क्योंकि सिर्फ किस तरह से हम जिए वहां पे बात आके खड़ी हो गई सर्वाइवल पे बात आके खड़ी हो गई है तो उसके आगे का जो होती है एक अच्छी जिंदगी उसके बारे में तो सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा है सुविधाओं की तो बात ही हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए सबको सम्मान से जीने का हक है और फिलिस्तीनियों को मिलना चाहिए धन्यवाद थैंक यू हैतल ऑडिबल आवाज नहीं आ रही उसी से बात करता हूँ ठीक है चलिए हेलो हाँ थैंक यू हैतल नाउ वी गो टू रजान अल-सकर दूसरी बड़ी समस्या जो आ रही है दरअसल पहले भी थी दरअसल इस जेनोसाइड के चलते हुए गाजा में इट एक्चुअली कॉल्ड मेंटल ट्रॉमा एक्चुअली on a mass scale actually Gaza people of Gaza are actually facing mental trauma
And we have with us Razan, who's a counselor, mental health counselor. Razan is from Khan University, and she's also a doctor, by the way. Actually, Razan is a psychologist working with Palestinians as a counseling center. Actually, she's also involved with various organizations for the protection of sexual abuse and exploitation of women. Razan, on like this. Yes. السلام عليكم. أسعد الله مساءكم. اسمي رزان ماهر الصفقة، فلسطينية من خان يونس ومن قلب غزة. عمري 29 عام. عشت كل تفاصيل حياتي بين شوارعها وحاراتها. درست فيها وترعرعت في أحضان تحدياتها اليومية. كانت حياتي استثنائية ومليئة بالتحديات. طفولتي ومراهقتي وشبابي لم تكن سهلة، وقد واجهت التنمر في كل مرة حاولت فيها الاندماج مع أقراني، سواء في الحارة أو المدرسة أو الجامعة. أذكر وربما لن أنسى أبدا عندما سجلت بدراسة علم النفس. رفض أحد أساتذة الجامعة تدشيني معتقدا أن قصاد القامة لا يمكن القيام بالتدخل النفسي، ولكن بحبي لهذا المجال قررت خوض التجربة ونجحت. تخصصت في علم النفس وتخرجت حاملة شغفا عميقا لفهم الإنسان ودعمه في أصعب الظروف. ثم عملت أخصائية نفسية مع المركز الفلسطيني للإرشاد، حيث كرست جهودي لمساندة الأفراد والأسر المتضررة وإعادة الأمل والكرامة لمن فقدوها. بين الإغلاق المستمر والحروب المتكررة فقد شهدت 5 حروب منذ صغري، ولم تتح لي الفرصة يوما لرؤية أي مدينة أخرى، ولم أتمكن حتى الآن من السفر خارج مدينتي. رحلتي المهنية والشخصية لم تكن سهلة، فقد واجهت تحديات كبيرة وتوقعات محدودة من المجتمع، لكن كل صعوبة كانت فرصة لأثبت أن القوة الحقيقية لا تقاس بالحجم أو المظهر، بل بالإرادة والشجاعة والإصرار. اليوم أنا فاعلة في مجال حقوق الإنسان والاستجابة الإنسانية. أؤمن أن كل خطوة أقدمها يمكن أن تغير حياة إنسان وتزرع الأمل في قلب الآخر، وأن الإنسان بإيمانه وشجاعته قادر على تجاوز كل العقبات وبناء مستقبل أفضل لنفسه وللمجتمع. منذ أكتوبر 2023 وحتى اليوم نزحت عدة مرات ودمرت حالتي بالكامل، ونجوت من الموت أكثر من مرة. فقدت الكثير من الجيران والأصدقاء والأحباء، وأصبح النزوح جزءا من معاناتي اليومية. تدميري جزئيا حرق ممتلكاتي والقصف المستمر أصبح مؤلما، ومع ذلك لم أتعود على هذه الخسائر ولم أعتبرها أمرا عاديا. ما زلت أعيش الخوف والتوتر لحظة بلحظة. عشت المجاعة والفقر والجحيم الذي خلقته هذه الإبادة، وكل ذلك ترك أثرا عميقا على صحتي النفسية والجسدية. بدأت رحلتي في النزوح منذ الأسبوع الأول من الإبادة، حيث اضطررت لترك منزلي وذكرياتي خلفي، وكان الألم أشبه بثقب لا يغلق في قلبي. سرعان ما أدركت أن المنزل ليس مجرد جدران، بل كان كل زاوية فيه تحمل قصة، كل ركن ينبض بالذكريات، وكل رائحة وصوت مرتبط بتفاصيل حياتي اليومية. الحارة، الجيران، وأماكن تنقلي لم تكن مجرد أماكن مألوفة، بل كانت امتدادا لشخصيتي وتجربتي الطويلة. تلك التجربة التي تقبلتني وجعلت من كل تحدي فرصة للتفوق على نفسي. كوني من قصار القامة كان تحديا إضافيا، فقد فرضت نفسي في مدينة القديمة بعزم وإصرار، مستفيدة من كل تجربة صعبة وصراع واجهته لتصبح شخصيتي قوية مستقلة ومتميزة. واليوم أجد نفسي في مدينة جديدة أتنقل بين شوارع غريبة ووجوه لم أعرفها من قبل. أبدأ رحلة إعادة بناء ذاتي وأفرض احترامي من خلال عملي وقدرتي على التكيف، كل ذلك تحت الإبادة. كل تفاصيل حياتي تغيرت، العنوان الذي اعتدت عليه اختفى، والروتين المنظم وتلك المساحات من الأمان
تبدلت، وحياتي اليومية أصبحت سلسلة متواصلة من التحديات، من البحث عن أي نوع من الاستقرار حتى لو كان وهميا، ومن مواجهة القلق والخوف من الغد المجهول. رغم كل هذا استطعت أن أحافظ على كرامتي وإنسانيتي، وأثبت لمن حولي أن الصمود لا يقاس بالحزم أو بالقوة الجسدية فقط، بل بالإصرار على الاستمرار والتميز وسط الفوضى والدمار. لقد كانت مبادراتي وعملي أعلى صوتا من الصواريخ التي دمرت مدينتي. فبدأت عملي كأخصائية نفسية في بيئة فرضها التهجير القسري. كان عملي اليومي يتمثل في زيارات مستمرة للقيام الملتحمة، حيث انعدمت أبسط مقومات الخصوصية والكرامة الإنسانية. ومع ذلك سعيت لتوفير مساحة آمنة للنساء، الجلسات الفردية والحياة صغيرة للأطفال يفرغون فيها خوفهم وألمهم النفسي، وأيام ترفيهية مفتوحة للمجتمع بأكمله من خلال الألعاب والموسيقى التي ساعدت على تخفيف الضغط عنهم ومنحهم لحظات من السعادة والمرح لم تكن موجودة. اخترت العمل للحفاظ على كرامتي وخدمة مجتمعي وأهلي. خلال العامين الماضيين عملت مع الأطفال وأبائهم وأمهاتهم وأولياء الرعاية للأطفال الفاقدين في أماكن النزوح. الأطفال هنا يشهدون الموت والدمار يوميا، يعانون اضطرابات ما بعد الصدمة، فمعظمهم يواجهون صعوبة كبيرة في النوم وتلاحقهم الكوابيس المرعبة. يعيشون في خوف دائم من كل حولهم، الكثير منهم منعزل، إنهم محرومون من أبسط حقوقهم: مأوى آمن يحميهم، مياه نظيفة للشرب، طعام يغذيهم، تعليم مستمر، ورعاية صحية عاجلة. هؤلاء الأطفال بحاجة إلى الحماية والدعم النفسي للنجاة وإعادة بناء طفولتهم المخلوقة. هذه إبادة ليس فقط للوقت الآتي، إنها إبادة للمستقبل. لم يكن العمل مع الحالات المتأثرة سهلا، فقد تعاملت مع أفراد فقدوا أهلهم وبيوتهم وأحيانا جزءا من جسدهم نتيجة الإصابات الناتجة عن العدوان، ومع تفاقم سوء التغذية ونقص المياه وانعدام المقومات الحياة الأساسية. كان التحدي مزدوجا، من ناحية تقديم الدعم النفسي بمهنية عالية مع الحفاظ على كرامة المستفيدين، ومن ناحية أخرى كسب ثقتهم في بيئة لم يعرفوا فيها الثقة وانعدم فيها الأمان. ومع مرور الشهور أصبح وجودي جزءا أساسيا في حياة المجتمع الناتج، أو بكلمات أخرى مجتمع جديد بالنزوح، حيث أصبحوا يسألون عني في حال تأخر ويطلبون مني الزيارات أو يريدون إعلامي ومناقشتي في حدث جديد مر بهم، وهو مؤشر واضح على الثقة المتبادلة وقيمة التدخل النفسي. ومع كل هذا الألم أرى بصيص الأمل في عيونهم. بعد جلسات قليلة ألاحظ كيف يحاولون التمسك بالحياة ويبحثون عن مساحاتهم الآمنة، وكيف يحولهم الألم إلى قوة. هؤلاء الأطفال رغم كل الصعاب يعلمونني معنى الصمود والإصرار على الحياة. هذا الإنجاز يأتي في سياق المجتمع المحافظ، حيث يحيط العمل النفسي بالكثير من الوصمة، خصوصا بالنسبة للفتيات والنساء. كثيرات يخشين الاعتراف بالحاجة للدعم النفسي خشية الحكم عليهن أو وصمهن بالضعف أو الجنون، ولذلك كان جزءا من عملي أيضا يتطلب مواجهة هذه الوصمة، توعية المجتمع بأهمية الصحة النفسية، بناء ثقة تدريجية، وتأكيد أن طلب الدعم النفسي هو حق إنساني وأساسي لا يقل شرفا عن أي دعم آخر. هذا الجهد لم يعزز فقط دور التدخل النفسي، بل ساهم في كسر حواجز اجتماعية وإعطاء صوت لمن فقدوا أو لم يسمع. توسعت تدخلاتي لتشمل مبادرات إنسانية طارئة تستجيب للاحتياجات الأساسية وتدعم صمود المجتمع في ظل ظروف غير مسبوقة. ومن أبرز هذه المبادرات تنظيم وصول المياه بشكل دوري للعائلات النازحة، حيث أنشأنا خطوطا لنقل المياه باستخدام الأنابيب والبراميل لتغطية احتياجات مئات الأشخاص. ولم تكن هذه المبادرة مجرد تأمين بمياه الشرب كحاجة أساسية، بل كانت تهدف توفير بيئة آمنة للأطفال والنساء، وخصوصا كبار السن الذين خرجوا في الحر القاتل أو البرد القارس والمطر.
وسط شوارع مدمرة مليئة ببقايا الحرب. كما ساهمت هذه الجهود في حماية الفتيات من المخاطر خلال تنقلهن في مدينة أشباح، والحفاظ على كرامتهن وتمكينهن من العودة للدراسة وإكمال حياتهن قدر الإمكان. كما قمت بالتنسيق مع مبادرين ومبادرات المحليين لتأمين وجبات غذائية مع المطابخ المجتمعية بمشاركة الشباب والصبايا وحتى الأطفال الذين شاركوا بحب ونشاط وبشكل حافظت فيه على الأمان من خلال التوزيع والتنظيم. لم يكن هذا العمل مجرد استجابة للاحتياجات اليومية، بل كان تعبيرا حيا على الانتماء الوطني والاجتماعي الذي أعتبره جزءا لا يتجزأ من انتمائي ونجاتي من هذه الإبادة، وزرع نفس القيم لدى الفتيات والفتية الذين أعمل معهم وأيضا الشباب والصبايا. لقد كان إيمانا راسخا بأن الصمود مرتبطان ارتباطا وثيقا بالمجتمع في خدم الخراب والتهجير. أصبح العمل المجتمعي والدعم النفسي والاجتماعي فعل مقاومة يصنع الأمل ويعزز قوة المجتمع في مواجهة الإبادة. رسالتي من قلب غزة لكل من يستمع لكلمة الآن ومن خلالكم إلى العالم. رسالة اليوم ليست مجرد سرد للمعاناة، بل نداء عاجل لكم جميعا للتضامن الفعلي مع شعب غزة. الإنسانية لا تعرف حدود، والأمل في قدرة الإنسان الجماعية على التعافي والوقوف أمام المحن أقوى من أي قصف أو دمار. لا تكتفوا بالكلمات، افعلوا شيئا اليوم. شاركوا صرخة غزة مع العالم، قاوموا لحماية حقوق الإنسان ولا تتغنوا بها فقط. لا تتركوا غزة وحيدة. الغزيون هم جزء أصيل من الإنسانية، ولن يرحم التاريخ من يغض الطرف عن الجرائم المرتكبة. من يترك الإنسان يواجه المجاعة، النسوح، الفقد والتطهير والإبادة بلا حماية أو دعم، التاريخ سيحاسب كل من لم يقف في وجه هذا الظلم وكل من تجاهل هذا التطهير والإبادة. كونوا معنا، تحدثوا، تحركوا وتضامنوا، كونوا صوت الأمل وكونوا جزءا من حماية الإنسانية، لأن صمود غزة هو صمود لكل إنسان على هذه الأرض، ونحن نستحق الحياة. شكرا لكم. I'm good. Hello. So, I'm going to summarize what she has delivered. She has started. My name is Razan Nahid As-Saqa, a 29-year-old Palestinian from Khan Yunus, in the heart of Gaza. I have lived every moment of life within its streets, shaped by struggle and pain. Despite growing up under occupation and surviving 5 wars, my determination never faltered. From a young age, I faced bullying and discrimination due to my short height, including from a university professor who claimed I could not practice psychology, but I pursued my passion, studied psychology, and graduated, driven by a deep desire to help others navigate trauma and pain. I began working with the Palestinian Counseling Center, offering psychological support to individuals and families affected by war and displacement. My work became more vital than ever after October 2023, when Gaza descended into the darkest period. I was displaced multiple times. My neighborhood was destroyed. I lost close friends and loved ones. I survived famine, bombardment, and loss, experiences that left a deep impact on my mental and physical health. Displacement forced me to leave behind not only my home, but memories, my identity, and my sense of safety. I realized home is not just a wall, but the stories, scents, and sounds that shape us. Being shot added another level of challenge, but I pushed through, determined to demand respect and dignity through my action and service, even amid war. My daily work shifted to visiting overcrowded tents,
where privacy and basic dignity were absent. I created safe spaces for women to speak freely and help children express their fear through play and art. I organized community-wide recreational days, moments of relief and joy that become rare but necessary. I work with children suffering from post-traumatic stress disorder, nightmares, and severe anxiety, many of whom live without clean water, food, education, or medical care. Their daily exposure to death and destruction is not just trauma, it's a genocide of present and future. Despite these challenges, I continued even when conditions made it nearly impossible. Many I work with had lost homes, limbs, or family members. In a place where trust and security were shattered, I earned the community trust through consistency and care. People began to ask for me, wait for me, and include me in their personal and communal moments. A sign that psychological support became essential, breaking the mental health stigma, especially for women, was a crucial part of my mission. In our conservative society, seeking psychological help is often misunderstood or looked down upon. I work to normalize it's a fundamental human right, encouraging people to see mental health as a vital to dignity and survival. My role expanded beyond psychology to include emergency humanitarian work. I helped to deliver clean water to displaced families using pipes and barrels, ensuring that hundreds had access to basic necessity. This initiative also protected girls and women from risking while searching for water. I coordinated with community kitchens to organize food distribution, involving local youth and children to create a sense of unity and safety. These efforts were not just survival strategies, they were acts of resistance, preserving dignity and building community resilience. Through it all, I learned that resilience is not about physical strength, but the will to continue. My work became a voice against silence, destruction, and despair. I send this message from the heart of Gaza. Do not stop at words. Do something today. Share Gaza's cry with the world. Resist to protect human rights and do not just sing about them. Do not leave Gaza alone. Gazans are an essential part of humanity, and history will not forgive those who turn a blind eye in the crimes committed, who leave people facing famine, displacement, loss, cleansing, and genocide without protection or support. History will hold accountable all who did not stand against this injustice and those who ignored this cleansing and genocide. Be with us, speak, act, and show solidarity. Be the voice of hope and the part of protecting humanity, because Gaza's resilience is the resilience of every human on this earth, and we deserve to live. जो उन्होंने कहा उसको हम थोड़ा हिंदी में समराइज करने की कोशिश करते हैं। रज़ान नाहिद अस्सक़ा ये फ़लस्तीन में वहाँ पे खान यूनुस में रहती हैं और ये साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने खास तौर से जो वहाँ पे कैंप लगे होते हैं, टेंट जो लगे होते हैं, क्राउडेड टेंट होते हैं, ये वहाँ पे जाती हैं और जो लोग साइकोलॉजिकल और मेंटल ट्रामा से गुजर रहे होते हैं उनकी देखभाल करती हैं। तो इनका ये पैलेस्टीनियन काउंसलिंग सेंटर के अंतर्गत उसके तहत काम कर रही थी और स्पेशली जब अक्टूबर 2023 से जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए तो इनका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर ये वहां जाती हैं, स्पेशली बच्चों को और महिलाओं के उनके साथ जो देखती हैं कि वो लोग वहाँ की बेसिक जो जरूरियतें हैं, खाना पीना पानी, इन चीजों से भी वो महरूम होती हैं। तो इन चीजों के जरिए उसकी हेल्प करते हैं। Thank you, Razan. It's a very powerful message that you give to all of us. Now we go to the next speaker, who is actually from West Bank, Ziad Amro. Ziad Amro is the president of the Palestine Association of Persons with Visual Impairment, a human rights activist who has been involved in negotiations on the Convention of Rights of Persons with Disabilities for many years. Amro has also been on the Independent Commission for Human Rights on the Rights of Persons with Disabilities. He has been constantly writing on disabled under the occupation and genocide.